मिला राइट हम इमेज को वो कर दूंगा शो कर दूंगा बैकग्राउंड लगा लेना अच्छा ये कुछ वेट वो प्रेजेंट इमेज को प्रेजेंट कर देना तेरे को कहाँ है वो डाउनलोड लैपटॉप से करके नहीं होगा हेलो इसे ऑन करके तेरे को है वो बना लेगा सब मैं बना लूंगा तू अपने को बना लूंगा जैसे फिर कंटिन्यू शिफ्ट तक लगा दूं उसकी हाँ
उसमें कुछ आया Hello, good evening, everyone. Evening. आता chat कर दे. Hello, good evening. Am I audible to everyone? Audible. Perfectly audible. Okay, great. Okay, so we will start this meeting in just like 1 or 2 minutes. Let's wait for the other teachers to join and then we'll start. ठीक है हाँ मैं आ जाऊंगी ठीक है ठीक है
कनेक्टिंग होता है, अब मैं आपको एक्सेस होगा ना। स्टार्ट कर लीजिए। Ragini ma'am, please turn off your mic. Ragini madam. परवेज चानिया है सामने ती बारीकच करायची बारीकच करायची मी तू अख्ख्या अख्ख्या मेरे करायची का आई काही खाली पट्टाच करस आहे कोई फेंक दी मैंने नीचे अच्छा किया Hello. Okay, I guess we can start our session. Okay, so I welcome you all in this session. Rajneesh, can you hear me? Yes, I can hear you easily. Okay, Rajneesh, can we start our session? Yeah, actually, I'm waiting for Vasu. We can No, I start our guess we session. can start. Yeah, sure. I can. Let's start our today's meeting. So, good morning, everyone. It's me, Rajneesh, and welcome you all in our today's session about the series related to the robotics. So, first of all, let me share my screen with you all, guys, so that other will also join firstly. Okay. So can you please permit from your side to so that I can share my screen? Actually, it's restricted for my end. Hello. Yes, sir. I guess there is a glitch, guys, little bit. Just wait for a second. Jay sir, actually, can you please tell me I'm not be able to share my screen from my side? As it's written, post disable participant screen sharing. I guess it's not there. Okay, no problem.
Okay, guys. So good afternoon, everyone. Again, and I hope that most of you already joined. And delay is there is a delay because of some issues. No problem. So I want all of you that please, if you don't mind, then please mute yourself so that I can speak and you can hear me too. आप लोग मुझे आसानी से सुन सके इसीलिए मेरे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज अपने अपने माइक्स ऑफ कर दे so that when I speak there will be no problem from your end. Thank you so much guys. Okay. Most of it didn't, okay. So somebody can please tell me why like today we are here to learn about robotics, right? So yeah. Now I can start myself. Okay, this is easy. Thank you so much. Now I'm the host, so I can easily share my part of PPT, which I really want to share. Okay, so my screen is visible to you all, right? Please, if somebody can, then please give me a thumbs up. So let's start with our PPT part. Warm greetings from STEMROBO side and myself, Rajneesh, and I'm with my colleague Wasif, and today we are here on the topic how teachers can use robotics as a fascinating and a learning by doing tools for students in the modern world. So as per the topic we all know, today we are going to discuss about the robotics. Today we are discussing about the AI, artificial intelligence, and how we can use it in our field of education and how it helps you to elaborate a lot of things in your surroundings. Okay, so let's get a review, a little review about our company, which is STEMROBO Technologies Private. Actually, I'm facing a lot of problem. Actually, I'm facing a little bit of problem because you all didn't mute your mics. So if you are not uncomfortable, then please, if you can please mute your mics right now. Thank you so much. Yeah, thank you so much. A lot of people did. Can you all please mute yourself? So it will be interesting session because like this we all getting a lot of noises और हम सबको पता भी नहीं चलेगा कि आज की meeting का किस topic, right? Teachers, can you please turn off your mics? Hello everyone, I'm requesting you all please turn your mic off. Or like. Just like we all are both are requesting because if you are making noise like this, then how can you understand and learn about the part of technology and robotics, right? Hello everyone, I'm requesting you all to please turn your mic off.
I know, Vasif, that they are all are like lot of enthusiastic right now because they are going to learn a different things about robotics and all. And that's why they are not liking to turn off their mics and all. So yeah, it is like get really great if they do that thing, right? Unmute the, Mr. Rajneesh, So Rajneesh and Vasif, see, I mute all of you. Listen, Okay, sir. I mute all of you, right? So because to make this session successful session, na, we need to do one thing. You guys all are in mute right now. Okay. I'm allowing Rajneesh and Vasif to talk, and after some time, I will allow everyone to talk. Okay. So Yeah, Rajneesh, I guess you can start. yeah, thank you so much, sir. And good afternoon, everyone, once again. Myself, Rajneesh, and I'm with my colleague Vasif Daniel to let you know people about all of the thing about robotics, artificial intelligence, and how our nature science actually work with the help of technology. So let me get in. Jason, I guess I'm not be able to share because this is like post disabled participation screen sharing. So can you please give me access to that? Yeah, This session is done, going to be a very great session for all of you guys. done, Rajneesh. Rajneesh, I guess your voice is little low, so the participants are facing little issue. So can you like figure it out? Ki what is happening right now? Like my voice is getting really low, or it's like a little bit of slow. Now it's okay. Yeah, now better. We can hear you now. Okay, You can that's go ahead good. now. That's good. That's good. So actually, from my side, okay, the problem is solved. Okay, then let's share the screen. सो रहे थे तो मम्मी क्या नहीं देगी झूठ बोल रही है झूठ बोल Okay, रही है so the screen is visible right now. I guess so. Yeah. Okay, then. So let's start our today's Yes. presentation. Just a देखो second. ये रोबोटिक्स है रोबोट है ये Okay, requesting Ravi sir to please mute yourself. Sir, please mute yourself. क्या एडल्ट थिंकिंग लैब है ना Sir, अरे यहाँ please mute yourself. रेस्टोरेंट बनाया ईट सीमेंट का नहीं जो Actually, there is like a mic connection issue right there. And it is working really slow. I don't know why. Just let me check. Vasif, can you please continue with the topic today? Because I think like from my side, it is the network connection issue. Yeah, of course. Thank you, Mr. Thank you so Rajneesh. much. Thank you all. Am I audible right now? For everyone, please raise your hand. Yes, yes. Okay, thank you. Thank you Audible. all. A warm greeting to one and all present here. So we are here for a webinar on a topic of like robotics. What is robotics and why robotics? Just I'm sharing you a slide flow. Just wait. Yeah. So is this visible to all? One and all present here. Yeah, it's visible. Yes, Okay, sir. great. It's visible. Okay, great. So why, what and why robot or robotics? Can anyone let me know when we talk about the robotics and robot, क्यों जरूरी है हमारे lifestyle, हमारे careers and all?
जो हमारे रोबोटिक्स है आखिर क्यों जरूरी है? कैन एनीवन लेट मी नो प्लीज इन a chat? Okay. To make the work easier. Okay, great. Anyone else? Faster. Okay, great. So exactly the thing is for the safety, speed, consistency, perfection, job creation and productivity. Basically हमारे day to day life में हम सभी already aware that we are living in the 21st century and we all are interact with many advanced technology day to day life. और हमारे home appliance पे we already implementing day to day life like for the easier life. Like हमें हमारे घर में जो old age people हैं उनकी कंसिस्टेंस लाइक उनकी लाइफ इजियर करने के लिए इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस एंड ऑल ये हमारी बहुत सारे बेनिफिट्स है. जस्ट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्टिविटी फॉर एनी जॉब्स लाइक जब हमें लार्ज क्वांटिटी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है वहाँ पे रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की बहुत ज्यादा यूज आ रही है डे टू डे लाइफ में. व्हेन वी टॉक अबाउट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस पहले आपने देखा होगा कि लाइक एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी ज्यादा टाइम लग जाती थी. नाउ इट इज वी कैन से इट इज इजियर एंड सेफ्टी. we can easily apply all the robotics and robot in the field of industrial robotics adjust for safety to maintain the speed, the perfection. Okay, so so can anyone let me know when we talk about the robots what's came in your mind? जब हम रोबोट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आती है? किस तरह के इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह के रोबोट्स एप्लीकेबल है? जब मैं बात करता हूँ रोबोटिक्स की, जब मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज रोबोट, रोबोट हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ एग्जीक्यूट करता है, मुझे रजनीकांत याद आते हैं, मुझे मेडिकल साइंस याद आती है. जब हम बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस आई एम गोइंग टू शेयर वन एग्जांपल टू यू ऑल. सपोज एक एक्सीडेंट हो जाता है आपकी सिटी में. जिसका एक्सीडेंट होता है आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं. डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी फॉरेन ऑपरेशन करनी पड़ेगी, इन्हें दूसरी कंट्रीज में लेके जाने पड़ेंगे, यूएस लेके जाना पड़ेगा. अब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये चीज पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती है, तो हम मेडिकल साइंस में रोबोटिक्स का यूज करते हैं. आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, एक रोबोटिक आर्म लगी पड़ी है, बहुत सारे आर्म्स लगे पड़े हैं और वो ऑपरेशन कर रहा है. एक कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो एक्सरे करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स एनालिसिस करते हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट है यहाँ पे ऐसे ऑपरेशंस करने पड़े हैं. वो रिपोर्ट डायरेक्टली दूसरी कंट्रीज में जाते हैं हमारे सीनियर डॉक्टर्स के पास. वहाँ पे वो डॉक्टर रीड आउट करते हैं, वापस एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे 2 mm का डेप्थ कट होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह के ऑपरेशन एग्जीक्यूट करनी है. वहाँ पे एक और रोबोटिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है. डॉक्टर उनको एक्सप्लेन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस पार्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक नई सॉफ्टवेयर बनाता है और इस रोबोटिक आर्म में इंडिया में इंपोर्ट करता है. अब विद द हेल्प ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग ऑपरेशन स्टार्ट होती है और पेशेंट की जान बच जाती है. जब हम बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ मूवीज, लाइक कि हमने मूवीज देखा है, एक रजनीकांत है, रावण है, जीवन है एंड ऑल, आयरन मैन है. ये कैसे रोबोट्स होते हैं? ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं. किस तरह की वर्किंग होती है, ये ऑटोमेटिकली मूव कैसे कर लेता है विद द हेल्प ऑफ व्हील्स एंड ऑल. जब हम बात करते हैं इन चीजों की, हेलो, Yes, you are audible. Hello. Yes, we can hear, sir. just wait. Continue, sir. Yeah, when we talk about humanoid robot, हम humanoid robot बनाते कैसे हैं? आपके दिमाग में आता होगा कैसे बनाते होंगे, आप कुछ बता सकते हैं प्लीज इन चैट बॉक्स और वॉइस. With the help of artificial intelligence, AI. Great, That's a fantastic, great point. great. Or anybody would like to The try about components like sensors, ICs. Great to Yeah, hear that's from you all. right. मैं थोड़ी सी एलेबोरेशन करता हूँ. When we talk about humanoid robot, ये बनता कैसे है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज मैं अपने कुछ फ्रेंड के साथ बैट्स, बॉल्स, स्टम्प्स, गुलीज, 2 एम्पायर है हमारे साथ, वो किसी ग्राउंड में जा रहे हैं. आप क्या समझोगे कि हमारी टीम और मैं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं?
ऐसा कुछ है? Yeah, sure. ओके ग्रेट। तो लेट अस अज्यूम कि जो कंपोनेंट्स है, जिस कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो क्रिकेट के लिए बैट्स है, बॉल्स है, गुलीज है। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमनॉइड रोबोट, जाहिर सी बात है इनको भी मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना? किसी ने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल फॉर द बैलेंस एंड ऑल। अच्छा, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा होगा, सेंस ऑर्गन्स। ओके, हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या करता है? डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो सेंस करते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। सेम एज इट इज ह्यूमनॉइड रोबोट में होता है। ह्यूमनॉइड रोबोट में जब हम बातें करते हैं, जब हम किसी चीज को टच करते हैं, उसको फील करते हैं, हम जब किसी पार्टिकुलर चीज को फोकस करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है दैट वी आर फोकसिंग ऑन दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और हमारे माइंड सेटअप पे क्या कहता है, अच्छा ये चीज ऐसा है, क्योंकि हमने पहले से रीड आउट अपने दिमाग में रख रखा है, जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक साइंस। ओके, सपोज हम अपने हाथों से टच करते हैं किसी पार्टिकुलर चीज को। ये पेन है, मैंने इसको टच किया, मैंने फील किया अच्छा इट इज लुकिंग लाइक ए पेन, जिसे हम लिखते हैं। इन दैट पार्टिकुलर वे जब हम ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करते हैं, क्या हम हाथों में एक ह्यूमनॉइड रोबोट हमने स्ट्रक्चर बनाया, एक शेप दिया, जिसके हाथ के पास, उसके हैंड के पास हमने एक टच सेंसर लगा दिया, हमने कुछ इनपुट दिया कि अगर इस हाथ के पास जो टच सेंसर है इस पे कुछ टच मूवमेंट होती है, तो हमें आउटपुट क्या मिलनी चाहिए कि ये पार्टिकुलर चीज कुछ है। एग्जैक्टली तो ये जो टच सेंसर है ये हमारा एक तरह का सेंसर है। व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोफोन्स, जब हम बोलते हैं हमारे जो वॉइस इंटरफेस करती है, क्या हम उसकी जगह माइक्रोफोन्स लगा सकते हैं जो हम ह्यूमनॉइड रोबोट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं? बॉडी बैलेंस के लिए जब हम बात करते हैं, हमारे माइक्रो कंट्रोलर में हमने कुछ सेटअप कर रखा है कि हम ऐसा खड़े होंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, तो ये हमारी स्पीड होगी, हमारे बॉडी को बैलेंस किया जा सकता होगा। एग्जैक्टली क्या बॉडी बैलेंस करने के लिए हम कुछ सेंसर यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड ऑल, जो पार्टिकुलर बॉडी शेप को बैलेंस कर सकता है? This all kind of components and sensor we can implement easily for the humanoid robot. So over to Mr. Rajneesh. Can you please start with this particular topic, before and after? Over to you, Mr. Rajneesh. Yeah, so let's go and learn about how we are evolving in our part of technology. हमने बहुत पुराने टाइम पे देखा है, in 2007 we don't have the mobile phones like touch screen era, right? We are using keypad phones. Then our technology get an advance and we are come to the touch screen part, right? Like my phone right now I have in my hand, it is a touch screen technology. Or if I talk about a lot of other things like lot of robots we are using in previous in medical line also. And same as in time, there was a time in 2013 when scientists introduced our first humanoid robot. Actually, it is not a humanoid robot, it is an android robot which is created by the scientists. But what happened actually, and it's launched in 2016, and by the way, the name of that robot is Sophia. So Sophia is a social humanoid robot developed by the Hong Kong-based company Hanson Robotics. So the part is actually the जो हमारा डिले हुआ वहां पे, सोफिया जो हमें इस्टेब्लिश करना था 2013 में, वो थोड़ा डिले हुआ 3 साल 2016 के अंदर. Why? There's an interesting story. The day when of the launching, when the scientists went to their lab in which Sophia was like resting and all. So what happened? The happen is the lab was destroyed by Sophia, and the scientist is in shock. Like today is the part of launching, and the Sophia is reacting like a baby, and the whole lab was destroyed. Then he's get confused. Okay, confusion के अंदर उन्होंने फिर पूछा like what happened? Because scientist and that Sophia robot, they both are very good friends, like you saw in robot movie, है ना, Chitti robot. So when he asked her like what happened, so उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जो कि आज भी साइंटिस्ट को हैरान करती है कि एक ह्यूमनॉइड लाइक एक रोबोट जो कुछ फील नहीं कर सकता है, जो कुछ सेंस नहीं कर सकता है, वो ऐसी बात कैसे बोल रहा है. सो देन सोफिया आस्क हिम लाइक इफ आई एम अ रोबोट, अगर मैं एक रोबोट हूँ, इफ आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, अगर मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकती हूँ, आई हैव नो फीलिंग्स, देन टेल मी व्हाई माय हार्ट मींस व्हाई आई एम एकिंग राइट है. उसने अपने दिल की तरफ उंगली रख के बोला कि मैं अपने यहाँ पर मेरे हार्ट पे दर्द क्यों हो रहा है,
why I'm feeling such emotions like people, human beings. So then scientists, सभी के सब scientists जितने भी थे सब confused हो गए और उन्होंने उस दिन उनका launch बिल्कुल रोक दिया. And then they traveled to the part of understanding that what happened because उनके लिए भी एक नई चीज थी. And उस टाइम पे conclusionally 2016 के अंदर हमें ये पता लगा कि robots, as far as the time will go on, they learn from you. If I talk about my Alexa, as per we all know in the current news is like Alexa is not be in very good state and Google company is going to turn it off. But if I talk about Alexa now, what is the fun part of Alexa? The fun part of Alexa is it learns from you. If I talk about the previous technology, it can't. But in today's life, Android, Alexa, or you can say Sophia, or can say and other artificial intelligent made products, they can learn from you. If I take once the time I'm sitting in my room, I ask Sophia about Sophia, can you please tell me like what is the spell of my name? She was like, yeah, I know. So I was, please elaborate it. She was like, Rajnish. I was like, okay, but you are wrong. So first she scolded me that not I am not wrong. Then I told her that the spelling of my name is Rajneesh. So at that time she learned from me. And after 2 days, when I again asked asked again my Alexa that can you please elaborate my name as I told you before. So she spell it correctly, Rajneesh. And that day also I realized about it that androids are really learning from humans and humans are learning from robots, right? Yeah, so this is all about the technology before and after because today's technology is really advanced. If I talk about our mobile phone, we are right now taking meetings on a Zoom meeting. एक टाइम था जब हम लोग सिर्फ लेटर्स लिख के ही अपनी बातें आगे पहुंचा सकते थे जिसके अंदर 2 से 3 दिन लग जाते थे. आई गेस सो इसलिए नागासाकी के अंदर भी जो हमला हुआ था अमेरिका के थ्रू अगर उस टाइम पर एडवांस हम इतने होते तो शायद वो बात नहीं होती अगर वो ऑनलाइन जैसे अभी हम बात करें वैसे ही कॉन्फ्रेंस एक अटेंड कर पाते, राइट? सो या टेक्नोलॉजी अब इस पॉइंट से क्या समझ आता है कि टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज उतना नहीं है जितना टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है. So today, in the growth of our era, modern age era, we are going to be like what? We are going to make ourselves up level by level in the field of technology. So I'm again hand over myself to Vasif so he can continue with the meeting. Yeah, Vasif. Yeah, thank you, Mr. Rajneesh, for this. So basically, the next slide is related to the challenges and career with innovations. Basically, everything is having challenges and it's all about the career for the innovation. It is related to innovation. When we talk about innovation, we already know जहां प्रॉब्लम होती है उसका प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद एक नई इनोवेशन नाम की चीज जनरेट होती है. इन इनोवेशंस के टाइम पे चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स. कुछ मल्टी फंक्शनलिटीज हर एक रोबोट में प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, लेकिन वी कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सम इनोवेशंस. जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कुछ रोबोटिक्स आर्म होते हैं इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स. इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स हमने एक पार्टिकुलरली जॉब्स कुछ मैन्युफैक्चर करनी है. हमें उसके हिसाब से जो हमारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं उनसे उन्हें इम्बेड किया जाता है. क्या हमने एक रोबोट बनाया, क्या वो मल्टी फंक्शनिंग करके मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है? सपोज आपने एक रोबोट कास्टिंग का बनाया, एक मैन्युफैक्चरिंग कास्टिंग का बनाया, क्या वो आपके डिफरेंट मॉडल्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है? नहीं. तो कहीं ना कहीं ये हमारे चैलेंजेस हैं इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स. जब हम बात करते हैं कैरियर की, सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि एक छोटे बच्चे होते हैं जो K-12 के स्टूडेंट्स होते हैं, 11th और 12th में होते हैं. उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आता है. उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स बोलते हैं हमें अपने बच्चों को मेडिकल फील्ड में भेजना है, लेकिन उस पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कहीं और रहता है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स. क्या ये पॉसिबल है? क्या वो कैरियर को इम्प्लीमेंट कर सकता है? क्योंकि उसका फोकस कहाँ है? रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज, रोबोट्स एंड टेक्नोलॉजी. लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स और हमारे कुछ दोस्त या उन पार्टिकुलर दोस्त का कहना होता है कि नहीं, या कुछ सीनियर्स ऑल्सो, नहीं मेडिकल फील्ड में ज्यादा स्कोप है, मेडिकल फील्ड में ज्यादा कैरियर है.
In case of that particular thing, we can easily embed, we can easily conclude these all things. मैंने एक एग्जांपल बताया था कुछ देर पहले कि एक मेडिकल साइंस में ऑपरेशन होना होता है। एग्जैक्टली मेडिकल साइंस में ऑपरेशन होना होता है। क्या एक रोबोटिक्स इंजीनियर, अब सपोज मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे मेडिकल बैकग्राउंड में जाने का है, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं इंजीनियर बनो, टीचर्स बोलते हैं नहीं इंजीनियरिंग कैरियर बहुत अच्छा होता है, कुछ दोस्त भी बोलते हैं कि नहीं इंजीनियर कैरियर बहुत अच्छा होता है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। मैं बेसिकली रोबोटिक्स में बहुत कम नॉर्मली कुछ ना कुछ इंसान को लर्निंग हो ही जाती है, लेकिन ऐसे गाड़ी ड्राइविंग मोड कर रहा है, इसी में दिखा रहा है। हेलो या सॉरी, मुझे मेडिकल बैकग्राउंड में जाना है, लेकिन समवन टोल्ड मी लाइक कि इंजीनियरिंग करनी है। क्या मैं इंजीनियरिंग करके मेडिकल फील्ड में जा सकता हूँ? मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको कि एक ऑपरेशन होना वाला होता है और उस ऑपरेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, एक रोबोटिक्स इंजीनियर की जरूरत पड़ती है जो उस पार्टिकुलर पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है। आप इजिली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस रोबोटिक्स को लेके जा सकते हैं। इससे आपका इंटरेस्ट भी पूरा हो जाएगा और आपकी टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ आईटी सेक्टर, व्हेन वी टॉक अबाउट द आईटी सेक्टर, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वो रोबोटिक्स की सॉफ्टवेयर पे काम करके इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, रोबोटिक्स में पाइथन लैंग्वेज यूज होते हैं, जावा लैंग्वेज होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम पे ऑर्डिनो की कुछ कोडिंग्स होती है, मैटलैब होते हैं जिसमें कुछ मैथ्स वर्क है, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट्स का मैथ्स बहुत ज्यादा, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कोडिंग की तरफ जा सकता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि मैकेनिकल के जो स्टूडेंट हैं या फिर पार्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल बैकग्राउंड को लेकर के रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट द डिफिकल्ट थिंग्स, यू कैन इजिली स्विच ऑन। इनोवेशन की बात मैंने आपको बताया, जहां पे प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, अगर उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके और एग्जीक्यूट करते हैं, एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं इन आवर रियल वर्ल्ड, दे कैन डेफिनेटली कॉल्ड एज लाइक इनोवेशंस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक कार चल रही होती है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं हम, चलते हुए में आग लग जाती है, क्या ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। क्या उस प्रॉब्लम को रोबोटिक्स के थ्रू हम Miss Geeta, please turn your mic off. Okay, thank you. Please turn your mic off. I'm requesting you all to please turn your mic off. Geeta ma'am, please turn off the mic. Geeta ma'am. Okay, thank you. हमारे पास STEMROBO में कुछ DIY किट्स मैन्युफैक्चर होती है, जिसका नाम है एक DIY किट्स का टिंकर ऑर्बिट। उस टिंकर ऑर्बिट में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, DST11, कुछ ऑर्डिनोस के किट्स होते हैं लाइक ऑर्डिनो नैनो या ऑर्डिनो यूनो, माइक्रो कंट्रोलर होते हैं एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर। उन सारे किट्स को हम इन्वॉल्व करके क्या एक छोटा सा सर्किट बना सकते हैं, एक मॉड्यूल बना सकते हैं, एक सेटअप बना सकते हैं जो टेम्परेचर को रीड आउट कर ले इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अगर एक छोटी सी इलेक्ट्रिक बाइक मूव कर रही होती है, वो कहीं ना कहीं हीट अप होता होगा शॉर्ट सर्किट के ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, अगर वो हमें टेम्परेचर राइज होता हुआ दिखे कि टेम्परेचर ज्यादा एक्सीड कर रहा है, और उस वक्त हमें उस पार्टिकुलर चीज को रिमोटली हमारे तरफ आ जाए कि इंडिकेशन हो जाए कि हाँ टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज हो रहा है, क्या हम उस आग लगने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम बचा सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट बचा सकते हैं। आप DST सेंसर यूज करके उसके टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को रीड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे इनोवेशन, कैरियर विद इनोवेशन एंड चैलेंजेस को मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट स्लाइड। Just wait. Yeah. Now I'm requesting you, Mr. Rajneesh, to tell about the platform, about the robotics to learn from beginning. Thank you. So, okay, now let's see. There are a lot of platforms, right? For example, if I am going to learn about robotics, so from where I can learn it easily.
है ना? If I need to learn about robotics, like how an LED glows, or if I talk about how I can create the basic projects. So there are two ways from our side, and what are these two ways? I'm just showing you right now. Just a second. Okay, so let me in the part. Yeah, platforms to learn about robotics from basic to advanced level. As per जब मैंने अपना career अपना start किया था robotics के अंदर, then I am in 7th class. Here I am learning about how to learn LED, और वो भी मैंने जिद में, because मेरे टीचर ने मुझे एक दिन ऐसे पकड़ लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो रजनीश, तुमने गलती कर दी है. एक्चुअली 10th क्लास का कोई प्रोजेक्ट था और मैं बस खड़ा होकर देख रहा था, उनकी गलती की सजा मुझे मिली. देन आई टोल्ड हिम दैट सर ठीक है, आप गलती मुझे से हुई है तो मैं इसको सही कर दूंगा पक्का. और लेकिन मुझे उसके बाद स्कोल्ड किया गया, तो उस जिद के अंदर आके मैंने अपना लर्निंग प्रोसीजर स्टार्ट किया. And how unlucky I am that I learn it my own. Well, this is a good part, learning on your own self, but still, it is not a good part when you get scolded for it, right? But that's not a problem. So now, in the modern age, when I came to my college, then I came to learn about this part of tinkerlearning.com, where it is a very helpful learning platform where you can go easily access freely. And right, if you are watching on Note, then this we are written. The interesting part about these platforms that they are freely accessible. If I talk about Tinkercad or Tinker Learning platform, so let's first discuss about the Tinker Learning platform as it written. Okay, so let's go through the link. Okay, Google Chrome. Well, if I tell you on my personal experience, this platform, Tinker Learning, is really helpful for learning how we create projects, right? Like here you can code virtual robotics. Like in first option, we have the 3D designing Tinkercad, and you all guys are really surprised, and all of the teachers who are already have ATL labs or the labs related to robotics, they know about the 3D designing Tinkercad. As far as I know, there are a lot of teachers who know about it. App development, because in my age of era, I don't know how we can create MIT application, how we get any kind of application. So here you can learn how to create applications like games or informative ones. Arduino basics. So basically, there was an age when we are, I talked about the age when we are using coal as our fuel. Then we came to CNG and all, biogases. Then we converted ourselves in right now we are using electric cars. Okay, but in advance when we are going to in our future, after if I'm watching my future, it's like after 10 years, what will happen? I guess we all are going to use the microcontrollers, and now you all are like, what are microcontrollers basically? So microcontrollers basically it's like our brain, which is controlling the whole body and telling us to do what we have to do. Like right now I'm talking to you all guys in English, और अब मैं आप सबसे हिंदी में बात कर रहा हूँ. तो जब मैं हिंदी में बात करूंगा तो मुझे क्या लगेगा? A lot of people right now who don't understand very easily in English, or lot of people right there out in our country who don't know how to speak in Hindi, but they know how to speak in English, so it will be helpful for them, right? So just in that way, Tinker Learning application help you all understand the part. It's just like just like the Scratch and all. And if I talk about breadboard activities, which are the basics, just से मैंने शुरू किया था. Rajnish, Rajnish, sorry for the interruption. Are you showing something like in Tinker Learning in our learning platform? Yeah, I'm going to show them, sir. Like, Okay, you are going to show. Okay, okay, fine. I thought you were sharing. Sorry. actually, my screen is not visible. No, you're still showing PPT. Oh, okay. I started from my side screen sharing. No, you Oh, need एक to minute. share that thing. Let me check, sir. Let me check. Okay. Okay. Still we can see PPT. Maybe you can unshare and share your full screen. Then only you are able to show all of them. Yeah, I was thinking about it, sir. So now visible. Mr. Rajnish, you can continue from this particular platform. Thank you. This particular okay. So let us consider that part again.
here. So as I talk about the Tinker Learning platform, I guess there's a lot of issue connection issues. So no problem. We will share the PPT with all of you guys so that you can access both through this link directly and watch what we are having with our Tinker Learning and in our Tinkercad. Tinkercad is a kind of platform where you can create your imaginations. As far I talked about the 3D printing, right? 3D printing में basically होता क्या है हम अपने मन के साथ like अगर मुझे कॉफी मग बनाना है या फिर एक पेन होल्डर बनाना है and I want to go to purchase in the market, but what if I say कि मैं वो 3D प्रिंटर से ही बना सकता हूँ अपने घर पे रख कर, right? So हम अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम अभी सीखेंगे कि उस थिंकरकैड प्लेटफॉर्म पर मैं इजीली अपने डिजाइन को बना सकता हूँ विदाउट गिविंग मनी टू अनदर इंजीनियर आफ्टर लर्निंग फ्रॉम थिंकर लर्निंग, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू आस्क if anybody here know about what is Tinker all about, because it is really to learn basic. Can you please tell me about what is Tinker? Innovative. Yeah, you're right. Tinker means innovation, right? Tinker knowledge means innovative knowledge. As it's written right here, it is a platform where we can easily give a stimulation to the ideology of our mind and tinker something new and also make 3D models according to the imagination of an individual. Means if I'm thinking about I want to get a home, but I want a 3D model in it so I can glow an LED light in it, and in the night I can use it as a lamp. है ना? So we can create with the help of these. And also we can learn the circuits virtually. Okay. At the same time, we can also go through the scratch part. And on my personal experience, the students who are in class 6, from 3rd to 6th, or you can say 7th also, they are always excited about creating project with the scratch where they can play a game. Like just like an MIT app, you can create games, you can create applications. Same like Scratch. What is Scratch all about? Scratch is about to create stories and games on the very beginning level, right? And if I tell you about the Tinkercad application, if I'm going to create some circuits in it with the help virtual breadboard, virtual LED lights and all, they are also इट इज अ पार्ट. अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जो मुझे पसंद है टिंकर कैट के बारे में, कि जब भी मैं सर्किट बनाता हूँ टिंकर कैट के ऊपर, तो वहां पर जब भी मैं जाता हूँ उसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं, राइट? एंड वो 3 ब्लॉक्स क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक आपको वहां पर सर्किट डायग्राम्स देखने को मिलते हैं. दूसरी चीज, सर्किट डायग्राम्स के साथ साथ आपको वहां पर पता लगता है कि अगर मान लो आपने कोई कंपोनेंट यूज किया और बाद में आप उसका नाम भूल गए, तो वहां पर एक पीडीएफ ऑप्शन होता है जहां पर आपको पता लगता है कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स के नेम्स यूज करे हैं. एंड सेम एट दैट टाइम आप लोग वहां से आर्डिनो कोड्स भी एक्सेस कर सकते हैं जब आप आर्डिनो के साथ वहां पर कोई कंट्रोल बनाते हैं. एंड व्हाट इज आर्डिनो? आर्डिनो इज आल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स which is related to the microcontroller, so we discuss about it later. Now, how robotics is beneficial for our environment? Just a second, guys. Yeah, Rajneesh, you may continue. The slide flow is continuously running. Mr. Rajneesh, can you please start the topic about robotics beneficial for our environment? The screen slide is already continuously going on. Thank you. Yeah. So let's talk about. I'm audible now, Wasif. Definitely, you are audible, and the screen slide flow is already going on. Thank you. Okay. So yeah. So let me talk about how robotics is beneficial for our environment. So first, I want to know from you guys. Like I'm very curious about it. Like you guys know about how robotics is beneficial for our environment. कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे बेनिफिशियल है, बिकॉज हम डेली लाइफ में मॉडर्न एज में आ गए हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं. सो क्या आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा कि हाउ रोबोटिक्स इज बेनिफिशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट? Now see, I am here giving you hints in agriculture, farming, space, It will, modern medical science. Or automation. sir, it will Automation, reduce correct. the load and increase the efficiency for the output work Okay. required. Yeah, that's a good point. Anyone else? Okay. So now let me tell you about the beneficial of it. Okay. Just like I told you before, in our military,
we are using lot of tech. How? पहले हमारे पास क्या होता था? We only have the rifles, if you see in our military and all. But आज के डेट में हम न्यूक्लियर वेपन्स को क्रिएट कर पा रहे हैं, हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं. एंड हाउ दे दोस रॉकेट्स आर वर्किंग इन एक्चुअल? It can, maybe it can be operated by the people, but they are operated it. But how it created? With the help of robotics. All the coding part, all the access part, all the manufacturing part, it all involves the robotics. As I talked about the rockets, we know that we are always, and we are also like right now, हम robots को space में भी भेज सकते हैं, है ना? Mars, Mission Mangal, we all know about it. कि स्पेस में भी आज का एक ऐसा मॉडर्न एजर आया है जहाँ पर रॉकेट्स के साथ हम लोग स्पेस में भी मटेरियल भेज सकते हैं और वहां पर स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट व्हाट प्लैनेट्स को. सेम टाइम के अंदर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी अब इतने एडवांस हो गए हैं कि हम वहां पर रोबोट्स को यूज करते हैं. पेस्टिसाइड्स, लाइक इन मेडिकल फील्ड आल्सो वी आर क्रिएटिंग मेडिसिन, एज वी ऑल नो. लाइक वी हैव, हमने बहुत ही मुश्किल वक्त निकाला है अभी कोरोना के साथ इन अवर पास्ट 2 years, where we learn about how to survive, right? And if there is no medical, there is no robotics, I want to really tell you now, आप अब सब मुझे ये बोलोगे अगर robotics का इसमें क्या खेल है, like what robotics is, why, how helping in our medical field. I really want to tell you how the machineries which help to create this medical, what the medical vaccines, it's all the part of robotics which help that part कि अगर हमें वैक्सीन बनानी है, हमें प्रॉपर्ली अगर मैं उसे स्थिर करते, लाइक एक प्रोसेस होता है मेडिकल के अंदर भी जब मेडिसिन बनाते हैं, that we have to check the combination of the chemicals, like it is correct or not. अगर आप सबने भी देखा हो, जो भी यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड है टीचर्स, उन सबको भी पता होगा कि सबसे पहले जब भी हमें केमिकल्स के बारे में स्टडी करना होता है या फिर किसी भी एक वायरस के लिए एंटीडोट बनाना होता है, तो उस एंटीडोट के लिए सबसे पहले हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस को चेक करना पड़ता है, लाइक इट इज गोइंग करेक्ट और नॉट, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें मिक्सअप करते हैं. अब अगर मैं उसे ऑन हैंड करूं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी समवन लाइक दैट, हमें उसके लिए कम से कम सिर्फ करने में 20 hours to 12 hours लग जाते हैं नॉर्मली. बट विद द हेल्प ऑफ मशीनरी वी कैन इजीली एक्सेस इट, बिकॉज देयर इज अ मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट द एवेंजर्स. मैंने उसके अंदर देखा था ये फैक्ट. देन आई केम टू नो दैट रोबोटिक्स इज हेल्पिंग इन इट. हाउ? In the part of manufacturing, like somebody also give me an example of advancement in technology about the automation part, right? And in agriculture also, or if I talk about robot in medical science, there is a theory. It's actually come into like I'm today reading a by newspaper. So उसमें मैंने देखा था कि कैलिफोर्निया के अंदर एक टेक्नोलॉजी अभी अभी एडवांस भी आई है, आप भी चेक कर सकते हो. सुबह ही मैंने डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, तो उस डॉक्यूमेंट्री में लिखा हुआ था कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा चिप डिजाइन किया है जो कि लोग बैकबोन के अंदर, जिनका बैकबोन वीक होता है या फिर वो चल नहीं पाते हैं, इट्स लाइक कि किसी के बैकबोन में इतना प्रॉब्लम है कि ही कैन इवन स्टैंड और सिट. सो साइंटिस्ट ने एक चिप बनाई थी, अभी रिसेंटली बनाई गई है, जिसके अंदर की अगर मैं उस चिप डिजाइन जो उन्होंने करा है डिजाइन माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से एंड ऑल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो मैं उस चिप को जब बैकबोन के साथ अटैच करूंगा, सो व्हाट विल हैपन, माय बैकबोन, दैट माइक्रो कंट्रोलर चिप विल access to my body part. Means it's not like वो मुझे control करेगी, it's like it give help to my backbone to move like a normal person, so that people जो लोग चल नहीं पा रहे थे अभी तक, माइक्रो कंट्रोलर हेल्प करेगा उन लोगों को चलने के लिए. और जस्ट लाइक हमें पता है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हैविंग कलर ब्लाइंडनेस और ब्लाइंड, so there are a lot of technology for them also, so they can easily operate on themselves and have the confidence to living in this world. Like there are a lot of acid issues, like we are living in a country where we have a lot of problem with the acid issues, like when somebody throw acid on the face, and you all know that what I'm talking all about. So science right now, पहले क्या होता था, पहले ये चीज होती थी कि डॉक्टर्स उस चीज को लाइक एसिड को साफ कर उस फेस को वैसे ही छोड़ देते थे. बट नाउ इन अवर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, इफ यू ऑल नो, मेडिकल also have the cosmetic industries where they treat that part with the help of science. Like I talked about that chemical reaction, है ना, with the help of robotics. So they treat that part and help that individual to walk on the road again with his or her confidence. So yeah, these are a little bit part about the how robotics is beneficial for our environment, and I really want to know from you people, like
if you ever seen or learn about these parts, like how we are, like how science, or you can say how robotics is beneficial for us. If you've seen any kind of example about it, is anybody is there who will tell me about it? Sir, knee replacement. Knee Yeah, this is replacement in very good. robotic. This is a very good point. Knee Sir, replacement. in hip implant surgery, it is also used in hip implant surgery. Yeah, that's right. Anybody Artificial else? arm. Artificial? Arm. Sir, Artificial arm, huh? robots can also be sent to the space. They need not require any oxygen to collect the data. Exactly, because humans really need oxygen to survive, and Sir, they we will don't agree also with help that. in household activities. They will help in household activities like Roomba. That was famous to Okay. help in household activities. Yeah, yeah, just like you can say like जो हमारे vacuum cleaners होते हैं, है ना? We are in day life. I am watching a series, very interesting series. It's all about robotics actually. So it's a sci-fi series in which I like मैंने क्या देखा कि वहां पर वो एक तो होता है कि normally हम vacuum cleaner जो घर में use करते हैं वो एंड्रॉइड बेस्ड वैक्यूम क्लीनर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कि जब भी उसे बोला जाता था दैट यू हैव टू क्लीन द पार्ट इन हियर इन दिस रूम लाइक एक पर्टिकुलर रूम के अंदर मुझे एज साफ करने हैं या फिर एक कॉर्नर में कुछ गिर गया है उसे साफ करना है सो वो उसे कमांड देता था कि लाइक आपको ये रूम में साफ करना है और वो रोबोट उसे सेंस करता था सेंस करके उस एरिया को साफ करता था एंड आई ऑल्सो गेटिंग अ रियल इंटरेस्टिंग पार्ट बट आई विल आस्क अबाउट इट लेटर सो नाउ आई एम गोइंग टू वासिफ अगेन so that he can continue with the meeting. Thank you, Mr. Rajneesh. Now the topic is like the next slide is growth of robotics in the past few years. जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की ग्रोथ कैसे है हमारे इन्वायरमेंट में like I already told you about like we already live in 21st century. एक एग्जांपल फिर से मैं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एग्जांपल बहुत ज्यादा देता हूँ when we talk about robotics in the field of transportation बात करते हैं हम 30 years before की क्या 30 years before ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इजी था at that time I think so जहां तक मैंने देखा है और जहां तक मैंने माना है वो ट्रांसपोर्टेशन with the help of some animals we can move from one place to another place with the help of some animals और एक वैसी कुछ ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग nowadays जब मैं बात करता हूँ 21st century की आप सभी ने टेस्ला का नाम जरूर सुना होगा अब आप बातों को रिलेट कर पा रहे हो कि हमारी जो रोबोटिक्स है वो पास्ट फ्यू इयर्स में कैसे ग्रोथ की है ड्राइवरलेस कार जो टेस्ला है आपको ऑटोमेटिक कार ड्राइव हो जाती है आप एक स्विच प्ले करते हो और ऑटोमेटिक विंडो डाउन हो जाता है क्या ये मारुति 800 में था क्या नहीं था बहुत सारे कार्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक फ्यूल सिस्टम कम हो रहा है और आपको बता देता है डैशबोर्ड पे ये भी एक एआई और रोबोटिक्स का एक पार्ट है आपने एक और चीज देखा होगा जैसे ही एक्सीडेंट होता है ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ सम जीप मॉड्यूल एंड ऑल like SIM 908A and with the help of that particular module automatically एम्बुलेंस आ जाती है ऑटोमेटिकली इमरजेंसी कॉल्स आ जाते हैं क्या ये रोबोटिक्स का पार्ट का ग्रोथ है एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तो ये थी हमारी ग्रोथ इन अ फ्यू इयर्स कुछ बात और भी हम करेंगे आपने बहुत सारे रोबोटिक्स को इम्प्लीमेंट होते हुए देखा होगा रेस्टोरेंट्स में आप कभी रेस्टोरेंट्स पे जा रहे होते हैं और वहां पे ऑटोमेटिकली सर्विंग प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ सम रोबोट्स तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत तेजी से इनहेंस होती जा रही है रोबोटिक्स इन आवर रियल वर्ल्ड Even sir, in recent days, one refrigerator is going to be installed in which a refrigerator by itself will give orders to the vendor for the empty vegetables. Exactly. So these having some issue and curation and some applicable in real life कि रोबोटिक्स की कुछ अच्छी और अच्छी चीजें भी हैं कुछ डिमेरिट्स भी हैं उन डिमेरिट्स को हम अगर सॉल्व आउट कर देते हैं वो इनोवेशन का पार्ट भी कहीं ना कहीं आ जाता है और डे टू डे लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो इतनी तेजी से रोबोटिक्स की इन्वॉल्वमेंट होना
आप स्कूल्स में देख सकते हैं, आप कॉलेजेस में देख सकते हैं, रोबोटिक्स के क्लब देख सकते हैं, वहां पे क्या तेजी से ग्रोथ हुई है एग्जैक्टली आप सभी के सामने है। आप अपने घर पे इतने सारे रोबोटिक सिस्टम देख रहे हैं, एआई सिस्टम देख रहे हैं, अलेक्सा देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं रोबोटिक्स की एक बहुत बड़ी पार्ट्स है। So this time is going to be for the question and answer. If you're having some question coming in your mind, please ask, free to ask. Thank you. Actually, I You have a can use point chat box before it, also. Vasif. Can I? I'm requesting you all to please put the message in the chat box about your question. So can we can easily give you an example answer for your particular questions. Thank you. If somebody are getting any kind of question, then he can write it down or also ask in a Google Meet right now. It doesn't necessarily like you have to write it down right there. Okay. If you're sorry to interrupt, if you are having some question related to Tinker Learning, Tinkercad, STEMROBO, what kind of work we are providing, we already told you about. Exactly, फिर भी अगर आपके mind में कुछ questions आ रहे होंगे, you can definitely ask. Like right now, Aarti Kapoor ma'am asked about how IoT will be the part of robotics. Actually, if I tell you about IoT, what is the full form of IoT is Internet of Things. So according to the name of it, it is already the part of robotics, ma'am. And we are like artificial intelligence. What is all about? It's also a part of IoT, because without IoT, we can handle artificial intelligence, right? So yes, IoT is the part of robotics. Ji sir, thank you. Thank you. So the next question is from Mamta Arora. Will you teach anything how to use parts? Yeah, exactly. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक कंपोनेंट्स के अलग अलग यूजेस होते हैं। याद करिए आप मेरे जो एग्जांपल थे क्रिकेट के, बॉल के क्या काम होते हैं ड्यूरिंग द क्रिकेट, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिकेट, बॉल का क्या काम होता है कि हम थ्रो करते हैं, उसको हिट करते हैं बैट से, एक पार्टिकुलर उस पार्ट्स का यूज हो गया। देन ऑटोमेटिकली वी कैन से कि अगर हम एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर की बात करते हैं, हमें टेम्परेचर चाहिए, क्या वो टेम्परेचर के लिए कुछ ना कुछ सेंसर्स होंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए, रीड आउट करने के लिए। वी कैन यूज DST11 एंड ऑल मेनी काइंड ऑफ सेंसर अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और वो छोटे छोटे पार्ट्स को यूज करके आप कहीं भी, सपोज कि LCD की बात करते हैं हम कि हमें कुछ राइट अप मिल जाए, हमने कुछ इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिल जाए। Exactly, we can use I2C, OLED, ये सारे components हैं, उसको हम basically use कर सकते हैं in the field of robotics. Thank you. Actually, there was a question from Mamta Arora ma'am that will you teach anything how to use parts? I mean, use of hardware used in robotics. Yeah, I like in today's lecture like today's webinar. Actually, it's not a lecture; it's a webinar. So in today's webinar, we talked about how technology is really beneficial or activate for us to operate, right? And if it is like, and we also introduced about the Tinker Learning, and we also introduced about the Tinkercad. As per, if I see there's anyone like, yeah, Yati Raj NC, he asked like, can you please share the PPT? Yeah, it is possible for us to share the PPT, so you can access, go through those hyperlinks for Tinker Learning and Tinkercad and operate it. And we also going to take, we can take the webinar. Okay, हम एक webinar अलग से conduct कर सकते हैं if you are really get curious about this our whole webinar session, कि आपको अगर इतना curiosity है कि आप भी learn करना चाहते हैं हमारी तरह कि how can you go access these things and learn to operate these things, right? So technology especially. So yeah, we can take another meeting in which we will discuss about how to operate Tinkercad and Tinker Learning. So it will be easy for us also to elaborate with all this session. And now, yes, I mean use of now we will answer Mamta Arora ma'am answer. Like I mean use of hardware used in robotics. So basically, if I talk about robotics, it's like robotics is not only about the hardware part, right? It also about the part of software. How?
Like I talked about the microcontroller part, right? Arduino is a microcontroller, and we are in the modern age era of microcontrollers. But how that microcontroller works, right? In our human brains, we don't know how to like क्या है ना, humans को नहीं पता था चलना कैसे, छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि चलना कैसे, तो वो धीरे धीरे ग्रो करना सीखता है, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे दौड़ना भी सीख जाता है. So it's just a part of कि उसने अपने माइंड में सीखा होता. Like I have to speak in English just like right now I learn in my school and college. And राइट, अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, जो कि एक फर्स्ट हमारी कॉमन लैंग्वेज है हमारे देश की, जो हमें आनी चाहिए, राइट. सो ये भी मुझे किसी ने सिखाई है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल पाता. और नो देन इट इज लाइक अ like talk of alien who is speaking anything else and we can't understand anything on. Okay, so it's just like that. Yeah. Next question. Sir, programming of robotic. It is a simple programming or digital programming, controlling for microprocessor. When we talk about the programming in the field of robotics, बहुत सारी कैटेगरीज होती है. हम इसमें पाइथन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, हम इसमें इम्बिट्स यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनो की एक शॉर्ट प्रोग्रामिंग होती है, आप उसे यूज कर सकते हैं. मैथ्स वर्क्स होते हैं, आप मैटलैब यूज कर सकते हैं. फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स वी आर यूजिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सपोज कि मुझे कुछ IoT बेस पे कुछ काम करने हैं जिसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए. हमने जो कोड किया है, सपोज हमने मैटलैब पे काम किया है, वी कैन यूज हमने एक कोड तैयार किया, सॉफ्टवेयर तैयार किया पाइथन पे, जिसकी हमें कुछ आउटपुट चाहिए कि ये पार्टिकुलर रोबोट साफ सफाई करे, वैक्यूम क्रिएट करे और डस्ट पार्टिकल्स को मूव आउट कर दे. ओके, बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग होगी, मल्टी फंक्शनल हो गई. एट दैट टाइम वी कैन यूज रास्पबेरी पाई, उसकी माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर हम उसमें यूज कर सकते हैं डेफिनेटली. तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, उसे हम डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे. थैंक यू. सर, डिजिटल प्रोग्रामिंग में हम 0-1 लैंग्वेज यूज करते फॉर कंट्रोलिंग मशीन. इज दिस द सेम फॉर रोबोटिक आल्सो? Yeah, Mr. Rajneesh. Yeah, actually, sir, we like you are right. In our digital part also, we all learn in computers about binary functions, 0 and 1. So digitally also we use these numbers. Like if I'm creating a car, I have to move it. So I use 1 as in the working process. And when we are going to use 1 in our microcontroller, that means is the car is on high, means the car is moving. And if I operate as 0, that means the car is now in low state, means it will stop when I command 0 and it will start when I command 1. So yeah, it can work digitally with the help of this concept. Sir, the movement of car will be based on 0 and 1. 0 represent low signal, we are not supplying any signal for functioning, and 1 represent high voltage, 5 volt or 10 volt, that will start the car. Is this the same for robot? या ऑफ कोर्स, अगर आप बात करें किसी डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर की, हमेशा बाइनरी सिस्टम में 0 का मतलब इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स ऑफ होता है, मतलब इट्स लो. व्हेन वी यूज्ड 1, सपोज आपने 7 सेगमेंट्स यूज किया है, एग्जांपल 7 सेगमेंट्स में कुछ LEDs होती हैं एट द बैक साइड ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, पार्टिकुलर कंपोनेंट्स, उसमें कुछ LEDs होती है. सपोज कि आपको A वाला पार्ट, सपोज ABCDEFG, ओके, आपको A पार्ट ऑफ करना है. यू कैन यूज दैट टाइम हाई लो आल्सो, यू कैन यूज आल्सो 1 और 0, 1 1 1 0 1 0, दैट काइंड ऑफ पार्टिकुलर थिंग. जिसे आपको ऑफ करना है आप उस टाइम 0 यूज करते हैं, जिसको आपको ऑन करना होता है उस टाइम आप 1 यूज करते हैं. सेम एज इट इज हाई लो में भी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. व्हेन वी रोटेट ए मोटर विद द हेल्प ऑफ any motor driver, with the help of a particular any motor driver, we can use high low also. Thank you. Thank you, sir. So what is the difference between AI and machine learning? Can you please repeat the question? So what is the difference between AI and machine learning? या ऑफ कोर्स, जब हम AI की बात करते हैं, हमने कुछ एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं आपको AI और मशीन लर्निंग की.
आपके घर में आपने गूगल इंटरफेस किया होगा वॉइस कमांड से, वो कहीं ना कहीं एआई का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाए। हमने एक 3D मशीन डिजाइन किया, उस पार्टिकुलर 3D मशीन पे कुछ प्रिंट आउट कर रहे होते हैं किसी सेकेंड सॉफ्टवेयर के थ्रू। सपोज कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है XYZ, उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमने कुछ प्रिंट आउट के लिए एग्जीक्यूट किया। ऑटोमेटिकली कुछ 3D मशीन में जो हमारी 3D मशीन है उसमें एक 3D पार्ट्स मैन्युफैक्चर होकर के आ जाती है। वो कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग एआई का पार्ट होता है। अब मेरी बात समझ गए होंगे आप, एआई कहीं ना कहीं एक गूगल इंटरफेस से रिलेटेड कुछ चीजें होंगी। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, कि एक 3D मशीन है, उसमें आपने कुछ इनपुट दिया है और वो आउटपुट हमें उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें दे देती है। एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपके घर में एसी होगा। आप जब स्विच ऑन करते हैं रिमोट से अपने स्मार्टफोन से, ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑन हो जाता है, ऑफ करना चाहो ऑफ हो जाता है। आपने उसके स्पीड को, फैन स्पीड को बढ़ाना है या लो करना है, आपने फिर से एक बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली उसकी फैन की स्पीड हाई हो जाती है, लो हो जाती है। एग्जैक्टली उसमें कहीं ना कुछ सेंसर्स लगे पड़े होंगे, एआई सेंसर आईआर सेंसर्स होते हैं जो एक ट्रांसमिट करता है और एक रिसीव करता है। तो कहीं ना कहीं ये एआई का रोल है। थैंक यू। Thank you, sir. And same related to, I want to add a one part also. If I talk about the basic, like basic. So basically, machine learning is kind of part of hardware, you can say, and the AI is part artificial intelligence. It is the part of software part. Okay, they both are connected, relatable, and there's a basic difference. अगर मुझे किसी छोटे बच्चे को समझाना है जिसे इसके बारे में पता ही नहीं है ना? So I can tell him about it. Okay. Or now there is a like also question about this. So what is the difference between Raspberry Pi and Arduino? So actually they both belong from a same family. You can say they are both what you can say, they both are product of a same company, means microcontroller. है ना? Microcontroller is their family. So actually Arduino, we used Arduino as our microcontroller to operate little, means जितने भी हमारे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उनके लिए आर्डिनो को यूज करते हैं, जो कि 12 वोल्ट तक पावर सप्लाई कर सकता है। एंड सेम टाइम पर अगर मैं रेस्पबेरी पाई की बात करूं, रेस्पबेरी पाई उससे थोड़ा एक एडवांस माइक्रो कंट्रोलर है कि जब हमें कोई बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो हम उसमें यूज करते हैं। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेस्पबेरी पाई ओवर आर्डिनो? The main big advantage of Raspberry Pi is you can also access Python language, and it give you a pathway to now access with lot of different kind of programming language. But in Arduino, it is a, you can say, not a drawback, but it's a part where you can only access Arduino based programming platform. If I'm not right, Vasif, if I'm not wrong, you can tell if I'm wrong about it. Yeah, of course you are right, Mr. Rajneesh. Okay. I think so. Mamta Arora asked the question. I mean, to use of hardware used in robotics. Exactly. I'm going to show you something. Basically, this is the hydraulic car, which is the combination of mechanism concepts. Like we are having some gearbox. We are having some like हमने कुछ ऐसा बनाया एक मैकेनिकल हार्डवेयर पे जो इस पार्टिकुलर जो हमारे एक बैरिक लाइक इसको लिफ्ट कर सकता है अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ सम बैटरीज। हमने एक पावर दिया और ये हमारा जो लेवल है इसे हम अप डाउन कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। क्या अगर हम इस पार्टिकुलर रोबोट कार को अगर हम इस पार्टिकुलर मैकेनिक हार्डवेयर कार को कुछ सॉफ्टवेयर से इनबिल्ड करते हैं, सपोज मैंने इसमें कुछ माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया, सपोज मैंने कुछ इसमें सेंसर्स ऐड ऑन कर दिया, उसकी कुछ कोडिंग कर दी जो मुझे आउटपुट चाहिए। इस हार्डवेयर कार को हमें लिफ्ट करना है विदाउट एनी बटन्स, फिजिकल टच। ओके, आपने कुछ वॉइस इंटरफेस पे कुछ कोड करा, आपने बाहर से आउटपुट दिया, इनपुट दिया विद हेल्प एक वायरलेस कार पे, और ऑटोमेटिकली ये लिफ्ट अप करता है, डाउन करता है। सो डेफिनेटली वी कैन यूज robotics software and we can implement in the hardware too. Thank you. Now there is a question, which programming language? Just wait. It means coding is the main part where we design the code for any purpose, or we can solve any whatever we desire. Of course, sir. Exactly. I already told you about robotics is the combination of software and hardware. When we combine software and hardware, automatically a robotics generate. Okay.
सो बेसिकली अगर हम एक मैकेनिक कार बनाते हैं, उसमें हमने कुछ रोबोटिक्स इंक्लूड नहीं किया, इट्स नॉट लाइक कि हमने उसे पुश किया और वो चल रहा है तो वो रोबोटिक्स कह सकते हैं उसे. इनफैक्ट वी ऑलरेडी नो अबाउट लाइक वी हैव टू इम्प्लीमेंट सम सॉफ्टवेयर टू द हार्डवेयर, so we can call as robotics is applicable in this particular object. Thank you. Do we implement Tinkercad in MATLAB? If so, if yes, then how? I'm requesting Mr. Jess sir for give the answer about the Tinkercad. Okay, so ma'am, your question is can we implement MATLAB in Tinkercad, right? Yes, Tinkercad in MATLAB, not MATLAB in Tinkercad. Okay, ma'am. So like, according to my knowledge, I have never done that, right? This part key, like we are implementing that thing, but whatever I know is basically your Tinkercad is basically for the designing and for the circuit stuff. And Matplot is totally different from that. So for me, like it's not like you can't do that, combining both of them. All right, thank you. Yeah, welcome, ma'am. Sir, once I was asked one question in an interview. Robotics will come under the category of augmented reality or virtual reality. I was doubt the question was wrong that time. Can you please repeat the question? Robotics will come under which category? Augmented reality or virtual reality? The basic part is that you first have to learn about the fact like how you are like thinking in your mind that it is a virtual or augmented. What do you Yes. think? So I have answered both because I had doubt on the question. I think it comes under both the categories, virtual and augmented. Yeah, it will. Actually, in augmented, if I talked about a virtual, augmented will Vasif can easily tell it very clearly. I will talk about virtual. So virtually, it's all about when you are using hardware, like when you are using software. If I am working on my laptop and I have to create some designs, then it's a kind of virtual part. If I talk about graphical designing, or if we talk about the animes and cartoons which students really like, so when we are creating them, so it is a kind of virtual part, or understanding 3D models. It's a kind of a virtual part. And now, yeah, augmented part. Massive. Augmented part, it's yours. Okay, so Sir, basically, one more question. Is this a robotic playing with the microprocessor as well as microcontroller for requiring our task? We have to Sir, learn in depth for microcontroller as well as microprocessor. so please let them answer my question first, please. Jess sir, please. Vasif, your voice is not coming. Hello, am I audible? Yeah. Now you are audible. Yeah, of course. The argue part, like Mr. Rajneesh already told you about, like about the Sophia robot. Once I thought like जब एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि कुछ आर्ग्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन थी, उनके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया. कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है रोबोटिक्स से, जैसा कि हमने बताया ह्यूमनॉइड रोबोट में सोफिया के बारे में, और उनसे एक रिलेटेड मैंने खुद एक वेबिनार से रिलेटेड ही कुछ टॉपिक चल रही थी जिसमें सोफिया को लॉन्च करके उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे थे. उनसे जब क्वेश्चन किया गया कुछ आर्ग्यू से रिलेटेड, उनके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए. तो कहीं ना कहीं ये रोल शो करता है कि रोबोटिक्स कहीं ना कहीं एक आर्ग्यू से रिलेटेड काम करता है. इसमें एक और चीज आती है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एक आर्ग्यू आता है कि रोबोटिक्स कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में एक हार्मफुल इफेक्ट भी पैदा कर रहा है, लाइक फॉर द लैक ऑफ जॉब्स. बहुत सारे लोगों के काम आसान हो रहे हैं तो जॉब फैसिलिटीज कम होती जा रही है. बहुत सारे लोगों की हमने जॉब पकड़ के रखा हुआ है या उसे कम कर दिया है. ऐसा कुछ नहीं है. वी आर लिविंग द 21st सेंचुरी ना. मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको कि पहले 30 इयर्स बिफोर हमने ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज किया है. नाउ इट इज आप ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज देख सकते हैं.
ठीक उसी तरह कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन हो रही है। सपोज कि मैंने एक रोबोट बनाया, उस पार्टिकुलर रोबोट के कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट होंगे, कुछ मेंटेनेंस होंगे, कुछ रिपेयरिंग होगी, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे अहम रोल रहते हैं फॉर द जॉब क्रिएशन, फॉर द आर्ग्यूमेंट को उसको रोक करके एग्जीक्यूट करना। तो इनका कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड रोल है। थैंक यू। It means I had answered right. Both are Yeah, of right course. options. Sometimes, yeah, of course. But I Sometimes, still had doubt. You sometimes corrected it, answer, right? yeah. Thank you. Someone asked how to use Tinkercad. You can visit the Tinkercad website, www.tinkercad.com. Jay sir already messaged the link in the chat box. You can go through the particular Tinkercad website. You can use your Gmail account to access that particular platform. और वहां पे आप 3D डिजाइन कर सकते हैं, आप सर्किट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप सिमुलेट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत ज्यादा इजियर हो जाता है एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आप वहां पे सिमुलेट भी कर सकते हैं। सिमुलेट करने के बाद आपको 100% श्योरिटी हो जाती है कि आपने जो कंपोनेंट्स लगाया है, जो सर्किट बनाया है, आपने जो कोड इंपोर्ट किया है, वो डेफिनेटली वर्केबल है। tinkercad.com. Yeah. And with this, I think we covered a lot, like a good session. And I just want to tell you, these all things we learn right now, or we discuss. STEMROBO Technology Private Limited really help you to learn about these things in very vast way, about innovation, about creation, about in the field of education, or with the help of the DIY kits, which we are having in our own self, right, from our side of the company. Because the vision of our is not only to discuss about the robotics in this kind of session or tell the student about technology, but our main role in the field of this education on the field of AIO technology is that you can access to it. You can explore with the technology. You can create your own innovations on Tinkercad also. If a person is good with the what, if you can say if a person is good with the designing part. So STEM robot technology give them a platform of Tinkercad where they can operate it. Tinker Learning, LMS we also says, Tinker Learning, we give that platform to learn about that one, right? So our vision is very clear to provide the best from our side about not about education. Education is like schools are already giving the educational part. We are giving the part of advanced knowledge related to upcoming future with the help of our DIY kits, or you can say the platforms which I shown you. And this is very good and easiest way according to me to learn because मेरे time पर तो ये सब भी नहीं था. When I'm learning, I'm on my self-dependent. We don't have internet at that time. If I talk about 2007 and all, but right now 2022, we have all access, and yes, it is an easy way. And I hope you really enjoyed today's session and learn a lot of things from it. And yeah, if there's something which we didn't cover, we will cover in our next webinar, which we will go to conduct if there is a lot of like enthusiasm or if you really like this webinar today. So we are definitely going to take another webinar where you can learn about more and more with lot of explosion, like exploring answers, exploring and like जैसे कि किसी का क्वेश्चन था थिंकर कैट, तो उसके अंदर हम बहुत इजीली अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. So thank you all. Now I have a little request, Vasif, 1 second. Now I have a little request from all that you all can please turn on your videos because it's like we both, Vasif and me or Jay, sir, we turn on our cameras. I really want to see the people right out there who are listening to our webinar. So if it's possible, you all, so can you please turn on your cameras? Because it's really make a session, you can Is say this fine, sir? amazingly outstanding. Isn't fine, sir? Meet Yeah, this Purpal is from fine. electronic Okay, engineer. okay. Oh, so yeah, we are belonging from the same community, sir. Yes. Electronic Yes, sir. engineering. It's me, Guneet. I am CSC IT engineer. Oh, that's great, ma'am. That's really great.
See, this is the part now where all engineers are get together and learn about different things from each other. It doesn't mean like we are here to teach or we are discussing about robotics and technology. That's why we ask questions. Like we are also learning from you guys. है ना? It's not like हम ही सब कुछ बता रहे हैं. हम भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख. Very simple way to transfer knowledge all over the India to many person. Exactly. See, this is our motto now. If we are not doing this, then what the meaning in all of this education part, right? So yeah, thank you so much everyone to join this meeting today. And this is a signing off from Rajneesh and Vasif from today's webinar. Thank you so much for joining today's webinar. Sir, please share some of your design in our mail also. Whatever you design in robotic, their software as well as hardware part. Yeah, we will share it. It would help us to create projects. Yes, sir, we will. You Actually, can Tinker Learning also. Rajneesh, Vasif, please continue. yeah. You can also go to the Tinker Learning platform. Rajneesh already told you all about the Tinker Learning platform. वहाँ पे आप documents, design, circuit and all everything with the help of videos and documents सब कुछ provide किया गया step by step. You can definitely start learning or beginning from your beginning. उसमें सारे steps भी दिए गए हैं, कुछ documents भी हैं, videos भी हैं. Definitely अब 100% surety के साथ मैं कह सकता हूँ आपको वो ज़्यादा helpful होगा. उसमें already up to date. Thank you. Thank you, sir. Okay, Thank you. Rajneesh and Vasif, before ending this session, just want to add over here. Can we do one thing? Can we share the Tinker Learning which you are saying that it will have all this thing, and can we Yeah, show of us? course. Can you show all Yeah. of them? Yeah, of course I'm showing. Yeah, please show that. And all of you, it is like you just need to log in and you need to just enroll for the course, and it is free. All the courses are free in our learning platform. You are still showing the PPT. Basically, this is the Tinker Learning website. I'm showing you all. Just wait. You can search from the Google tinkerlearning.com. This is the first result cam. This is the website tinkerlearning.com. Firstly, you have to go with the login and registered. सबसे पहले आप register करेंगे, create an account. You have to do first step with the registration. You should complete the particular blank. Your website is not showing here. Only your PPT is on the screen. Oh, just wait. Sorry. Now is it visible? Yeah, it's visible. Perfectly visible. Okay. So I'm again starting with the new. Just wait. Now is this visible? Yeah, it's visible. So basically, this is the website tinkerlearning.com. You can go through the first result. I'm so sorry for this one. Just wait. Yeah, this is the platform of STEMROBO learning. Like you have to go to the login and register column. Firstly, the first step you have to do, like you have to complete your registration. You can go through the register and count. Some data you have to fill, like mobile number, user email, username, user password, and confirm password. After doing that, you can go through the same again, just like this one. You have to mention email ID.
Actually, I have a question from everyone. Can you please tell me, like, you see the login part right now, in which we log in our Tinker Learning application? Yeah, Yeah, it's perfectly visible. yeah. So Perfectly after visible. that, Okay. after completing your login process, registration and login process, you can see here a lot of courses. Suppose you are going to take some classes schedules like suppose I'm going to take virtual board basics projects. I have to click this one. So basically you can see here a lot of course content is already provided. Suppose I'm going to take LED gluing activity. They are having some documents and videos also. Suppose I'm going to take an documents from this side. और जैसे ही हमने क्लिक किया Okay, so the I guess there is a issue from Vasif's side. So you're like, if I'm not wrong, sorry, you can easily see the document, right? आप सबको document अच्छे से दिख रहा होगा, if I'm not wrong. Rajnish, we can see the document part, and I hope you will understand that you just need to just change the number, you just need to move left and right for just seeing the next part. Can you show that also? Yeah. Sorry. Your talk, like, this is a platform I want to tell you. It's about you can easily access to all these activities. If I'm like clicking on the virtual LED glowing activity, it's like interactive video. So if you are not, no, one second. Yeah, sorry. So you can play this video right here, like this. And you can learn from here if you don't know how to access in it. So you can access from here and learn about how you can easily understand the part. और जस्ट लाइक हमने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी जिसके अंदर हम ये पूछ रहे थे, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर हमें अगर खुद से भी कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो हम थोड़े से खुद से प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हैं. सो उसके लिए एक बार मैं आपको बाहर आकर दिखा देता हूँ. Like, this is a part of virtual breadboard activities which we basically the kids will learn from it. And if you are a teacher or a robotics engineer, well, we have a lot of people from our community right here. So you can go through these things. Like, these are the DIY kits I'm talking about. And this is the part for the classes, and this is the part teacher and mentor training. It's a project gallery. You can go through this project gallery, and you can see right here. There are a lot of courses, Medboard, digital lock system, and all. Right? So you can see digital door lock system, smart car, Aadhaar-based health monitoring system, smart safe cleaning system. If I open one of them, like smart car, okay, it's a virtual smart car. Let me, I guess it's open on its own. If I'm open it, it's like a YouTube video where the children who created it, they will elaborate it about it, like this one. Audio is, I guess audio is not coming. So I guess Rajnish, this is very beneficial to get an idea also, right? So yeah, this is a very great part where they can idea from it. And I correct. think that now your doubt is cleared about this. Yeah, okay. I already shared one link in the chat box, all of you, in which you can download the application also. That is in the Play Store, in the App Store. Okay. So same thing which you can see on the website. Same thing is available on the app also. So go to that. I already share the link. If you have any doubt, you can ask us right now, and just save that link, because I'm sure about it. Somewhere it will definitely help you.
and you can share with your students also. They will also download, they will also learn. Like, see, everything is there, like breadboard activities, Arduino is there, Python is there, AI is there, ML is there. So every stuff free of cost, everything is there. Okay, so it's a great website, great application. I want all of you to do that. Yes, thank you so much. Oh, thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah, I guess we can continue, Rajesh. Yeah, Right? so this is all about our today's topic, and this is really a great session from all of our side, because I think like a webinar is will not be appreciated or not be completed if the people in present right there unka full support na mile. So it's a good gathering today, and thank you so much everyone. We will meet in another interesting session related to robotics soon. So yeah, we can end this meeting now, Jason. Okay. Thank you so much, guys, for coming in meeting. Have a nice day.